production, B. increases in cost of production, C. increases in money income, D. increases in demand of cash balance. तो इसका सही ऑप्शन होगा C. increases in money income. अगला प्रश्न, फिलिप्स कर्व shows relationship between A. inflation and employment, B. wages rate and unemployment, C. rate of tax and tax revenue, D. public revenue and expenditure. तो इसका सही ऑप्शन होगा B. wages rate and unemployment. A. A businessman stores in capital in the form of money. The main reason of this: A. money in the kingpin of all economic developments, B. storage of money functions as accumulation of purchasing power, C. in it is base of credit, D. functions as a medium of exchange. तो इसका सही ऑप्शन होगा B. storage of money functions as accumulation of purchasing power. अगला प्रश्न, the situation in which the value of money decreases constantly, it is called A. deflation, B. inflation, C. reflation, D. none of these. तो इसका सही ऑप्शन होगा B. inflation. अगला प्रश्न, money inflation and money deflation, A. both are equally bad, B. money inflation is more dangerous, C. money deflation is more dangerous, D. both are equally beneficial. इसका सही ऑप्शन होगा C. money deflation is more dangerous. अगला प्रश्न, in which year the RBI was established, A. 1933, B. 1935, C. 1947, D. 1949. तो इसका सही ऑप्शन होगा B. 1935. अगला प्रश्न, for which group the money inflation is beneficial, A. people having fixed income, B. consumer, C. producer, D. none of the above. तो इसका सही ऑप्शन होगा C. producers. अगला प्रश्न, due to what reason money deflation does not take place in the country, A. over taxation, B. increases in bank rate, C. cancellation of currency notes, D. printing new currency. तो इसका सही ऑप्शन होगा D. printing new currency. अगला प्रश्न, the main disadvantage of paper money standard is A. fear of printing of currency more than requirement, B. no importance outside the country, C. fastly traceable, D. fear of fast lost. तो इसका सही ऑप्शन होगा A. fear of printing of currency more than requirement. अगला प्रश्न, इंडियन पेपर मनी इज ऑपरेटेड बाय A. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, B. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, C. none of the above, D. both of the above A and B. तो इसका सही ऑप्शन होगा D. both of the above A and B. अगला प्रश्न, द concept of inflationary gap was given by A. Wicksell, B. Keynes, C. Milton Friedman, D. A.W. Phillips. तो इसका सही ऑप्शन होगा B. Keynes. अगला प्रश्न, which of the following measures with help in checking inflation, A. fall in bank rate, B. increases in public expenditure, C. devaluation, D. stability in exchange rate. तो इसका सही ऑप्शन होगा D. stability in exchange rate. अगला प्रश्न, inflation is beneficial to which of the following section of economy, A. creditors, B. inventors, investors in bonds and securities, C. debtors, D. consumers. तो इसका सही ऑप्शन होगा C. debtors. अगला प्रश्न, the main reason of money inflation in India is A. increasing physical deficit, B. increasing budgetary deficit, C. unfavorable balance of payments, D. low productivity of Indian laborers. तो इसका सही ऑप्शन होगा B.
इंक्रीजिंग बजटरी डेफिसिट। अगला प्रश्न, व्हाट इज स्टेजफ्लेशन? ए मनी इन्फ्लेशन अलॉन्ग विथ डेवलपमेंट, बी मनी डिफ्लेशन अलॉन्ग विथ डेवलपमेंट, सी मनी इन्फ्लेशन आफ्टर डिफ्लेशन, डी मनी इन्फ्लेशन अलॉन्ग विथ रिसेक्शन। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी मनी इन्फ्लेशन अलॉन्ग विथ रिसेक्शन। अगला प्रश्न, devaluation means a decreasing the value domestic currency in comparison to currency of other country, b increasing the value of domestic currency, c issuing new currency in lieu of domestic currency, d none of above। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए डिक्रीजिंग ऑफ वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी इन द कंपैरिजन टू करेंसी ऑफ अदर कंट्री। अगला प्रश्न, डिफ्लेशन इन बेनिफिशियल टू अ प्रोड्यूसर, बी टेंडर्स, बी सी फिक्स्ड इनकम ग्रुप, डी डेटर्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी फिक्स्ड इनकम ग्रुप। अगला प्रश्न, अ सिचुएशन ऑफ simultaneous high inflation and large unemployment is called a reflation, b डेनिफ्लेशन, सी स्टेजफ्लेशन एंड डी रिसेक्शन। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी स्टेजफ्लेशन। अगला प्रश्न, डिमांड डिपॉजिट रेफर टू डिपॉजिट रिसीव्ड इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट, डी सेविंग बैंक अकाउंट। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी करेंट अकाउंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट। अगला प्रश्न, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट अर्न रिलेटिवली हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ए सेविंग डिपॉजिट, बी टर्म डिपॉजिट, सी करेंट अकाउंट डिपॉजिट, डी होम सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी टर्म डिपॉजिट। अगला प्रश्न, which type of bank loan allows the borrowers to withdraw money from time to time up to a certain limit fixed by the bank, a ordinary loan, b cash credit, c overdraft, d discounting of bill। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी कैश क्रेडिट। अगला प्रश्न, the use of which card become the borrowers of the bank, a credit card, b debit card, c ATM card, d all of these। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए क्रेडिट कार्ड। अगला प्रश्न, इन द बैंक रिसीव ₹1000 and primary deposit and maintain a reserve ratio of 20%, other thing remaining the same, how much loan can be given, a ₹800, b ₹1000, c ₹4000, d ₹5000। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ₹1000। नहीं सॉरी, इसका सही ऑप्शन होगा ₹800। अगला प्रश्न, इफ द बैंक रिसीव्ड ₹1000 and primary deposit and maintain a reserve ratio 20% per, other thing remaining the same, what will be extent of credit creation, a ₹800, b ₹1000, c ₹4000, d ₹5000। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ₹5000। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ensure credit creation of the maximum extent, a cash transaction, b larger reserves, c larger size of primary deposits, d lower volume of currency in circulation। तो इसका सही ऑप्शन होगा लार्जर साइज ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। अगला प्रश्न, हु डिफाइन इन्फ्लेशन एज टू सच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, ए कीनियस, बी रॉबर्टसन, सी कॉलबोर्न, सी क्राउथर। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी कॉलबोर्न। अगला प्रश्न,
Which of the following correctly explain inflation? A. Inflation is a monetary phenomenon. B. Inflation is a state in which prices are rising. C. Inflation is a post-full employment phenomenon. D. Inflation is a persistent and appreciated rise in general level of प्राइस. तो इसका सही ऑप्शन होगा डी. इन्फ्लेशन इज अ persistence of appreciate rise of general level of price. अगला प्रश्न, which of the following is not a sources of obtained fund by a bank? A. share capital. B. deposits. C. overdraft. D. borrowings. तो इसका सही ऑप्शन होगा C. overdraft. अगला प्रश्न, the principles governing the investment policies of a bank do not include A. principle of safety. B. principle of liquidity. C. principle of long duration. D. principle of diversity. तो इसका सही ऑप्शन होगा C. principle of long duration. अगला प्रश्न, the size of cash reserve of a bank does not depend upon A. legal obligation. B. amount of loan. C. volume of deposits. C. condition of banking development. इसका सही ऑप्शन होगा B. amount of loans. अगला प्रश्न, type of collateral securities consist of A. stock exchange securities. B. goods and title to goods. C. bills of exchange. D. all of these. तो इसका सही ऑप्शन होगा D. all of these. अगला प्रश्न, which of the following is a liability for a bank? A. deposits. B. investments. C. loans. D. bills receivable. तो इसका सही ऑप्शन होगा A. deposits. अगला प्रश्न, which of the following is an asset for a bank? A. capital. B. reserve fund. C. loans and advance. D. bill payable. तो इसका सही ऑप्शन होगा C. loans and advance. Next question, the sources of funds for a bank is A. share capital. B. reserve fund. C. deposits. D. all of these. तो इसका सही ऑप्शन होगा D. all of these. अगला प्रश्न, at present interest on saving account is A. 3 to 5% per annum. B. 8% per annum. C. 4 to 5% per annum. D. 4% per annum. तो इसका सही ऑप्शन होगा C. 4 to 5% per annum. अगला प्रश्न, बैंक ऑफिशियल मस्ट possess quantities of A. foresighted. B. practical experience. C. capacity to make correct estimates. D. all of these. तो इसका सही ऑप्शन होगा D. all of these. अगला प्रश्न, the most important principle of The most important principles of utilization of banking funds is A. principle of safety. B. principle of productivity. C. principle of diversity. D. principle of tax expansion. तो इसका सही ऑप्शन होगा 111 A. principle of safety. अगला प्रश्न, most of the banking funds are invested in A. loans and advance. B. call money. C. dead stock. D. securities. तो इसका सही ऑप्शन होगा A. loans and advance. अगला प्रश्न, the actual capital raised through the sale of shares is called A. authorized capital. B. issued capital. C. subscribed capital. D. paid up capital. तो इसका सही ऑप्शन होगा C. subscribed capital. अगला प्रश्न, which of the following institutions is called
वर्ल्ड बैंक, ए IBRD, बी IMF, सी IDA, डी IFC। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए IBRD। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट अ constituent of World Bank Group, A IBRD, B IDA, C IFC, D ADB। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी IBD। सॉरी ABD डी को। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस गिव्स लॉन्ग टर्म कंसेशनल लोन्स फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ए IBRD, बी IDA, सी IFC, डी नन ऑफ दिस। इसका सही ऑप्शन होगा डी नन ऑफ दिस, नहीं सॉरी बी IDA। अगला प्रश्न, द लोन्स गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड क्रेडिट्स, ए वर्ल्ड बैंक, बी IDA, सी IFC, डी IMF। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी IMF। अगला प्रश्न, मेक करेक्ट पेयर्स, ए IMF इन्वेस्टमेंट्स इन इंडस्ट्रीज, बी वर्ल्ड बैंक लोन ऑफ डेवलपमेंट्स, सी IFC SDR, डी IDA लोन टर्म कन्फेशनल लोन। इसका सही ऑप्शन होगा बी वर्ल्ड बैंक लोन्स ऑफ डेवलपमेंट। अगला प्रश्न, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, ए द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज being fixed in the foreign exchange market and increases in the demand for foreign exchange will result into fall in exchange rate। तो इसका सही ऑप्शन होगा नहीं सॉरी बी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज begin fixed and increases in its supply will result into fall in exchange rate, C the demand of foreign exchange is related to the volume of exports, D one important determine the supply of foreign exchange। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज being fixed and increases in its supply will result into fall in exchange rate। अगला प्रश्न, which of the following statements is true in relation to purchasing power parity theory, PPP? A purchasing power parity is determined on the basis of gold price in two countries, B it's applicable in case of convertible paper currency, C purchasing power is a moving pair, D purchasing power pair in a fixed pair। इसका सही ऑप्शन होगा सी परचेजिंग पावर pair in removing pair। अगला प्रश्न, equilibrium rate of exchange is on which A gives artificial gain from exports, B makes of currency overvalued, C increases foreign exchange reserves, D gives neither unfair gain nor loss and foreign trades। इसका सही ऑप्शन होगा डी gives neither unfair gain nor lose in foreign trades। अगला प्रश्न, unstable exchange rates result into a internal economic instability, B simultaneous to international capital follows, C encouragement to capital formation, D
एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, इंटरनल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अगला प्रश्न, द एक्ट ऑफ simultaneously बाइंग अ करेंसी इन आवर मार्केट एंड सेलिंग इन द अनदर मार्केट is called A, speculation, B, sporting, C, forwarding, D, arbitrage। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, आर्बिट्रेज। अगला प्रश्न, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विच इज कंपल्सरी टू बी डिपॉजिट बाय फॉरेन एक्सचेंज विथ RBI's, A 20, B 40, C 50, D 10। तो इसका सही ऑप्शन होगा A 20। अगला प्रश्न, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन A 1947, B 1949, C 1955, D 1935। तो इसका सही ऑप्शन होगा B 1949। अगला प्रश्न, द नंबर ऑफ branches of foreign exchange banks in India are A 202, B 152, C 41, D 100। तो इसका सही ऑप्शन होगा A 202। अगला प्रश्न, which of the following is not a constant of the organized money market? A Reserve Bank of India, B commercial banks, C cooperative banks, डी इंडिजिनियस बैंक। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, इंडिजिनियस बैंक। कर्स। अगला प्रश्न, विथ रिगार्ड टू कॉल मनी मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? ए इट्स प्रीडोमिनेटली एन इंटर बैंक मार्केट, सी कॉमर्शियल बैंक्स ऑपरेट एज बोरोवर्स ओनली, सी some banks operated and lenders and borrowers, the financial institution operates as lenders। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, कॉमर्शियल बैंक ऑपरेट्स इन बोरोवर्स ओनली। अगला प्रश्न, कॉल ऑफ मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर अ कोलेट्रियल लोन, बी रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल, सी वेरी शॉर्ट पीरियड लोन, डी सेल ऑफ परचेज ऑफ बॉन्ड्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, वेरी शॉर्ट पीरियड लोन। अगला प्रश्न, द बैंक ऑफ इंग्लैंड वॉज सेटअप इन ए 1664, बी 1964, सी 1847, डी 1944। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए 1664। A present note issuing is the monopoly of A central government, B the central bank, C commercial banks, D none of these। तो इसका सही ऑप्शन होगा B, the central bank। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।